Assalamu alaikum class 6. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So class, today is 6th of May 2021 and the day is Thursday. Fine? So yesterday we studied about the concept of multiplication of negative fractions. Isn't class? I have minus 2 1 by 2 multiplication sign, then 4 2 by 5. So who will tell me firstly what type of fraction that I have? कौन से fractions है मेरे पास? Very good. Both fractions are mixed fraction, isn't? ऐसे ही है. So how we can solve mixed fraction? Very good. We will multiply the denominator part with the whole number, which is 4. I will write in the rough area, which is 4. Now I have add 1 into it. Okay, because this is the rule of mixed fraction. First we will multiply the denominator by whole part and then we will add the number which is in the numerator. So 5 by 2. 5 as it is and 2 क्या होगा जो denominator में वो as it is आ जाएगा. Now first we have minus sign, we will write minus sign as it is 5 by 2. Okay, 5 by 2. Next fraction that we have class is 4 2 by 5. 4 2 by 5. So firstly we will multiply 4 by 5 and we get 20 from it. Now we will add 2 into it. So we have 22 and we will write 5 in the denominator. Fine. Now we will write multiplication sign as it is and the fraction that we get from it, which is 22 by 5. We will write like this. Fine. Now we have two fractions and both are improper. आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन से उसको किसी फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो जो आंसर है वो हमेशा कौन सा बनेगा? इम्प्रॉपर. कौन सी टाइप बनेगी? इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट वी रेड इन इम्प्रॉपर? द न्यूमरेटर पार्ट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. सो यहाँ पर भी ऐसे है और अगर आप यहाँ देखो तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर क्या है? किससे? डिनोमिनेटर से भरा है. ठीक है. Now it is very easy to solve. As I told you yesterday, when we have two fractions and there is a sign in between is multiplication. So we will simply multiply the numerator part with numerator and the denominator part with denominator. Isn't? So minus 5 multiply 22 and 2 multiplied by 5. We will write like this. Okay? Now 22 by 5, 5 2 times 10, 1 carry, 5 2 times 10 and this will add and in the end we have 110. Okay, we have 110 minus 110. Now in next step we will multiply the denominator part, which is 2 into 5. So 2 into 5 is 10. Okay class. In next step what would we do? Yes Vanya, want you tell me? Very good. As you look, we have 110 in the numerator and 10 in the denominator. So we will simply write 110 in dividend and 10 in the divisor. Now
If you look, this is equal to 10. Isn't class? The dividend is equal to divisor. If I take 10 one times 10, because this is greater than 10, which is 11, so I will take 10 one times 10 and I have 1 from it and 0 as it is. In next I have 11. I have 1 again. 10 1 times 10. So ये proper cut हो गया यहाँ. So what is the answer class? 11. So in the end we have minus 11. Minus sign as it is आ जाएगा और 11 is your answer. Okay? क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है जो हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, बट जब नेगेटिव साइन आता है तो उसमें हमने क्या देखना है, असाइन करना है उसको. साइन किसके अकॉर्डिंग असाइन करेंगे? साइन टेबल के अकॉर्डिंग. ठीक है. सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू प्रीवियस लेसन. नाउ टुडे वी हैव division involving fractions, negative fractions. Find exercise number 2D. Page number is 52. Question number is 5. Find the value of each of the following. A part, B part, 4 by 15 divided by minus 10 by 3. So my first fraction is 4 by 15. Okay, my first fraction is 4 by 15. Then I have division sign, bracket, then minus 3 by 10 by 3. Isn't class? So who will tell me what is the criteria when we have division of fractions? हम क्या करते थे, मैंने आपको बताया था ना. Yes, Amna, you tell me. Very good. हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जब हमारे पास डिवीजन इन्वॉल्व होता है, डिवीजन हमने करना होता है फ्रैक्शंस का, तो हम क्या करते हैं, वी विल सिंपली चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, बिकॉज वी कांट सॉल्व डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. ऐसे ही बताया था. सो जब हम डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, सो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल. इजंट? फाइन. सेम रूल यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे. फर्स्ट फ्रैक्शन इज 4 by 15. ओके, नाउ वी विल चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन. जैसे हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, द नेक्स्ट फ्रैक्शन विल बिकम इनवर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. 3 in the numerator we will write 3 in the numerator and 10 in the denominator. ये क्लियर हो गया सबको? और जो साइन है वो एज इट इज आ जाएगा, विच इज नेगेटिव. नाउ इट इज इजी टू सॉल्व. हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ी थी लास्ट टाइम. क्या करते थे हम लोग उसमें? वेरी गुड. वी विल सिंपल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर पार्ट विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट विद डिनोमिनेटर. सो वी विल मल्टीप्लाई 4 minus 3 and 15 multiplied by 10. So 4 into 3 is minus 12 and 15 into 10 is 0, 5 times 0, 0, 1 times 0. I will write multiplication sign over there because it is the rule of multiplication. When we have done with one digit number, we will write in the next step multiplication sign below the number. Fine. Now 1 को भी इस होल के साथ करेंगे. 1 5 times 5
1 times 1. In the end we will add the whole, which is 0, 5 and 1. Fine. 150. Okay class, we have 150 in the denominator. If you look, the unit place in the numerator is 2 and the unit place in the denominator is 0. So it is divisible by 2 or not? क्या हम इसको divisible ये हो सकते हैं 2 पे? Very good. It is easily divisible by 2 because the unit ended with 2, 4, 0, 6, 8. We will simply divisible by 2. 2 6 times, 2 7 times 14, 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा and 2 5 times 10. Okay, we have -6 by 75. We have -6 by 75. So class, as you know, ये तो 2 पे divisible होता है, but this will not divisible by the table of 2, so we will cut by the table of 3. 3 2 times 6, 3 2 times 6, 1 यहाँ shift हो गया and this will make 2 digit number which is 15. No, so 3 5 times 25. अब और cut होगा ये? No. So in the end we will write 2 by 25. Okay class, we will write 2 by 25. So class, according to question number 5b part, I have 4 by 15 divided by division, then bracket -10 by 3. So this is my question. So as I told you, when we have division involving fractions, so firstly we will change division into multiplication sign. ओके हम क्यों चेंज करते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन में? बिकॉज हम डिवीजन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं फ्रैक्शंस में. जब भी डिवीजन का साइन आता है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में. सो क्या क्राइटेरिया यूज़ होता है यहाँ? जब हम उसको चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा विल बिकम द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. रेसिप्रोकल मीन्स कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा? न्यूमिनेटर. फाइन. In next step we will write 4 as it is, then multiplication sign, then minus sign as it is आ जाएगा. अब जो न्यूमिनेटर में हमारे पास बना था नंबर वो क्या था? -3. So we will write as it is. अब क्यों हम इसको ऐसे as it is लिख रहे हैं? Very good. As I told you, when we have multiplication involving fractions, so we will simply multiply numerator with numerator and denominator with denominator. Fine. So when we will multiply 4 into -3, we get in the end is -12. Okay. So the numerator in numerator we have -12 and in denominator we get 150. ये क्लियर हो गया सबको? क्या करेंगे हम? जब डिनोमिनेटर में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 150. इन नेक्स्ट स्टेप वी विल कट एंड विल राइट इनटू इट्स रिड्यूस फॉर्म. जब हम इसको कट करेंगे बाय सेम टेबल, सो इन द एंड वी हैव -2 by 25. ओके. अब ये इससे ज़्यादा जो है वो रिड्यूस नहीं हो सकता, सो वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल राइट इनटू इट्स फॉर्म. फाइन. Okay, now I am going to solve another part which is related to this. E part I have -1 by 4. Division sign, then 3 by 8. Okay, my first fraction is -1 by 4 and my second fraction is 3 by 8. So firstly, as you look class, the first fraction is mixed fraction. So I will solve this fraction first. क्या करूंगी मैं? सिंपल पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगी, विच इज 4
then I will add this number into it, which is 5. So this minus sign as it is, numerator is 5 fraction, then the denominator number as it is. Okay, then we have division sign, which will be as it is. In next step we will change division sign into multiplication. जैसे ही हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मींस 8/3. फाइन, 8/3. In next step, it is easy to solve now. We have two fractions and there is a sign of multiplication in between. So what is the criteria, class, to solve multiplication involving fractions? Very good. We will multiply the numerator part with numerator and denominator part with denominator. So minus as it is, 5 into 8 is 40. 5 8 times is 40 and 4 3 times is 12. 4 3 times is 12 and 5 8 times is 40. Minus sign as it is आ जाएगा हमारे पास in next step. So we will write minus sign as it is. Now if you look, the unit place, the number which is in the denominator and the unit place is 2, and if you look in numerator the unit place is 0. Isn't class? So मैंने क्या आपको रूल बताया था डिविजिबिलिटी का. If we have 0, the number ended with 0 2 4 6 8, so it is very obvious that these numbers are easily divisible by 2, by the table of 2. Fine. So अब ये भी 2 पे कट हो सकते हैं. So I will cut it 2 times और ये 0 2 6 times. Again 2 3 times, 2 1 times and 0. अब तो ये कट नहीं हो सकता. So I will write as it is, minus 10/3. अब हम इसको मिक्स में लिख सकते हैं 10/3. So 3 1 times 3 3 2 times 6 3 3 times 9. 3 times 9. Now the next step is to subtract. क्या करते हैं हम? subtract करते हैं. Now this dividend is smaller than 3, so we will stop here. This one will be shift into numerator. 3 will be shift as a whole and 3 will be shift as a denominator. So we will write 3 1 3. 3 1/3. See, this is your answer. Fine class. Now I am going to repeat this. You have to be listen very carefully. I have first fraction which is minus 1 1/4. Division sign, then the other fraction is 3/8. मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम कि जब हमारे पास फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और उसमें डिवीजन साइन इन्वॉल्व होती है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते. ओके, वी कांट सॉल्व डिवीजन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस. सो उसका सिंपल वे क्या होता है सॉल्व करने का कि हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं. फाइन. व्हेन वी विल चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में जो डिवीजन के बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल बन जाता है. ठीक है, जो फ्रैक्शन होता है वो क्या बन जाता है? रेसिप्रोकल. सो इन नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट -5/4. ओके, और डिवीजन को जब हमने चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में तो जो नेक्स्ट है वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 8/3. पहले 3/8 था तो रेसिप्रोकल जब आया उसका तो वो क्या हो गया? 8/3. इन नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट, अब क्या करेंगे हम? एज आई टोल्ड यू, it is very easy when we have two fractions and there is a sign in between is multiplication. So we will simply multiply numerator part with numerator and denominator part with denominator.
In the end, we will write minus 5 into 8 and 4 by 3 into denominator. So we have minus 40 by 12. So both numbers having unit place is 0 and 2 in which both are divisible by 2. So मैंने इसको 2 पे कट किया and I get minus 10 by 3. So minus 10 by 3 को मैं reduce form में लिख सकती हूँ. Very good. By dividing, I will write in this number into mixed number, which is minus 3 1 by 3. So this is all class which is related to division involving negative fractions. If you find any difficulty, you